हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस ऑनलाइन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर नीट 2020 फ्रॉम द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी important for नीट 2020. Before I discuss this information with you, let me introduce myself. My name is Ashok Hussain. I have done masters in life science from Jamia Millia Islamia. I have also done masters in education from Kashmir University. I have also qualified CSIR UGC NET, that is National Eligibility Test, for assistant professor in 2005. I have 15 years of teaching experience. Now, let's discuss this information. Which is the smallest human cell? Erythrocytes are 6 to 8 micrometers in diameter, while as the blood platelets are 2 to 3 micrometers in diameter. But blood platelets are considered to be cell fragments instead of being cells themselves. So, यहाँ पे अगर क्वेश्चन अराइज हो जाता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, so the right answer will be the erythrocytes, because blood platelets are considered as the cell fragments, not the cells. Dual existence. Cells of multicellular organisms have dual existence, one for themselves and the other as components of the individual. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स होती हैं उनकी डुअल एग्जिस्टेंस होती हैं, एक अपने लिए, एक एज ए कंपोनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल. Membrane channels. Membrane channels are the channels through which the materials are transported across the membrane. They are of two types. Two main types of membrane channels are aqueous channels for the passage of water and ion channels for the passage of ions. Important point here is that is Nahr and Sackman were awarded Nobel Prize in 1991 for the discovery of the single ion channels. Membrane fluidity. Membrane fluidity always increases with the increase in number of lipids with unsaturated fatty acids such as palmitoleic acid, oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, and small chain fatty acids such as lauric acid, myristic acid, palmitic acid, stearic acid. मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिपिड्स, जिन लिपिड्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे, जैसे मैंने बताया पामिटोलिक एसिड हो, ओलिक एसिड हो, लिनोलिक एसिड हो या लिनोलिनिक एसिड हो, या स्मॉल चेन फैटी एसिड्स अगर लिपिड्स में होंगे तो उनके नंबर बढ़ने से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है. लिविस. Lewis in 1931 discovered pinocytosis. Pinocytosis is a bulk transport of fluid matter and substances dissolved in it across the cell membrane by forming a minute detachable vesicles called as pinosomes. लिविस ने 1931 में डिस्कवर किया पिनोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस एक बल्क ट्रांसपोर्ट टाइप है जिसमें फ्लूइड मैटर में सबस्टेंसेस डिसॉल्व्ड होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. वहाँ पे डिटैचेबल वेजिकल्स बनते हैं जिन वेजिकल्स को हम पिनोसोम्स कहते हैं. दिस पिनोसाइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग. इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द पिनोसोम्स, that is the detachable vesicles formed by the pinocytosis, are very small and are not visible under the optical microscope. The another method of the bulk transport is phagocytosis. It is the transport of solid matter like food, foreign particles, pathogens across the membrane by forming a detachable vesicles called as phagosomes. Phagocytosis
एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसमें सॉलिड मैटर लाइक फूड, फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजेंस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और बाय मीन्स ऑफ बाय फॉर्मिंग द डिटैचेबल वेसिकल्स, जिन वेसिकल्स को हम कहते हैं फैगोसोम्स। दिस फैगोसाइटोसिस वाज डिस्कवर्ड बाय मेटचिनिकॉफ इन 1883। Phagocytosis is also called as cell eating. Adsorptive pinocytosis. Adsorptive pinocytosis is a special kind of the pinocytosis. It occurs in case of macromolecules like proteins. Membrane possesses special receptors areas for them. As soon as the macromolecule attaches to the receptor site, the latter invaginates to form a pinosome. एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस जो होता है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ पिनोसाइटोसिस होता है। इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इन मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर साइट्स होती है, वही रिसेप्टर साइट्स इन्वेजिनेट होती है जब उसके इन कंटैक्ट में वो मैक्रोमोलिक्यूल आएगा, और फिर वो इन्वेजिनेशन डीपन हो जाता है और बना देता है एक वेजिकल जिसको हम कहते हैं पिनोसोम। बट यहाँ पे जो एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस होता है, नॉट मच फ्लूइड इज टेकन इन, ज़्यादा फ्लूइड अंदर नहीं लिया जाता है बाय मीन्स ऑफ द एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस। और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट एड्सॉर्प्टिव पिनोसाइटोसिस का, जो यहाँ पे पिनोसोम्स बनते हैं दे आर डायरेक्टली पास टू द रीजन ऑफ यूज लाइक गोल्जी कम्प्लेक्स। जो पिनोसोम्स यहाँ पे बनते हैं जहाँ पे उनका यूज होता है वहीं पे उनको डायरेक्टली पहुँचाया जाता है। और द इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर फॉर द नीट 2020 is the pinosomes formed in the adsorptive pinocytosis are called as the receptosomes. They are called as the receptosomes. Next point here is the cell organelles without membrane covering. There are some cell organelles which are not covered by a unit biomembrane. The organelles are ribosome, centrosome, centriole, nucleolus. Nucleolus is present inside the nucleus, and the cytoskeletal structures. There are three types of the cytoskeletal structures: microfilaments, intermediate filaments, and microtubules. Cell organelles with single membrane covering. कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती है जो जिनमें एक मेम्ब्रेन कवरिंग होती है? तो देयर आर सम सेल ऑर्गेनेलीज विच आर कवर्ड बाय अ सिंगल यूनिट बायोमेम्ब्रेन. द सेल ऑर्गेनेलीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी एपरेट्स, वैक्यूल, लाइसोसोम, सफीरोसोम, peroxisome, glyoxysome, thylakoid. Cell organelles with double membrane covering. There are three cell organelles which are covered by double membrane covering, double unit membrane covering. These organelles are nucleus, mitochondria, and plastids. Plastids are semi-autonomous organelles having DNA and double membrane envelope. The term plastid was introduced by Ernest Haeckel in 1866. Depending upon their color, plastids are of three main types: leucoplastis, chromoplastis, and chloroplasts. Leucoplasts are colorless plastids and do not possess any pigment. They are mainly responsible for storing the certain substances and have been divided into three main categories. Amyloplastis. These amyloplastis are those leucoplastis which store the starch. Oleoplastis or lipidoplastis or oleoplastis. They are those leucoplastis which store the fats. And Eleuroplastis, proteoplastis or Eleuroplastis or proteoplastis or proteinoplastis. They are those leucoplastis which store the proteins. The second class of the
plastids are called as the chromoplasts. They are the plastids which are yellow or reddish in color because of the presence of carotenoid pigments. Chlorophyll is absent in chromoplasts. The third class of the plastids are chloroplasts. They are greenish plastids which possess photosynthetic pigments, chlorophylls and carotenoids, and take part in the synthesis of food from inorganic raw material in presence of the radiation energy by a process called as the photosynthesis. तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि which one of the following cell organelles possess the double membrane covering. ना तो न्यूक्लियस दिया गया होगा, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन, ना तो प्लास्टिड ऑप्शन दिया होगा, आपको वहां पे दिया होगा सपोज ल्यूकोप्लास्ट ऑप्शन दिया होगा, या एलियोप्लास्ट दिया होगा, एलियोप्लास्ट दिया होगा, या क्रोमोप्लास्ट दिया या क्लोरोप्लास्ट दिया होगा. तो यहाँ पे तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट इज लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल. The largest cell organelle is the nucleus, followed by the mitochondria in animal cell and chloroplast in plant cell. न्यूक्लियस सबसे बड़ी ऑर्गेनेली होती है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल सेल्स में और क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स. Smallest cell organelle. The smallest cell organelle in the eukaryotic cells is the ribosome. As we know, the ribosomes are the protein machineries. They help in the protein synthesis and are not covered by any unit biomembrane. Ergastoplasm. Ergastoplasm is another name of the endoplasmic reticulum, but this ergastoplasm term was given by Garnier in 1897. So it is the endoplasmic reticulum of Garnier in 1897, while as the endoplasmic reticulum the term endoplasmic reticulum was coined by Porter in 1953. What is ergasome? Ergasome is another name of polyribosome or polysome. Polyribosome और polysome क्या होता है? Sometimes सेल को एक प्रोटीन की बहुत सारी कॉपीज की ज़रूरत पड़ती है. एक ही प्रोटीन की बहुत सारी कॉपीज चाहिए एक सेल को, तो उस वक्त एक ही मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं. एज वी नो the information for the protein synthesis present in the messenger RNA in the form of triplet codons. और जब एक मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम. और इसी पॉलीराइबोसोम और पॉलीराइबोसोम का दूसरा नाम है इर्गैजोम. Ergastic substances. Ergastic substances is another name of the cell inclusions. As we know, the cell cytoplasm of the cell is made up of the three components: cytoplasmic matrix, cell organelles, and cell inclusions. These cell inclusions are non-living substances which are present in the cell. They are also called as deutoplastic substances. The cell inclusions have been grouped into four categories: reserve food, excretory or secretory products, inorganic crystals, and pigment granules. Chloroplasts. We all are aware about the chloroplasts. Chloroplasts are the second largest cell organelles in the plants and are the organelles which help in the photosynthesis. Chloroplasts are the cell organelles which are covered by the double unit membrane, and inside the chloroplast there are some sac-like structures. Those sac-like structures are called as the thylakoids. The thylakoids or these sac-like structures get arranged just like the stacks of the coins and form a structure called as the grana. The stacks of thylakoids is called as the grana.
On the basis of whether the grana is present or not, the chloroplasts have been divided into two types. Agranal chloroplast, those chloroplasts which are without the grana, and granal chloroplast, those chloroplasts which are with the grana. Agranal chloroplast occur in bundle sheath cells of C4 plants, algae, and bryophytes. This information is very important for the NEET 2020. That is, this agranal chloroplast occur in bundle sheath cells of C4 plants, algae, and bryophytes. Leeuwenhoek. Leeuwenhoek is one of the famous personality in the biology. He was the first to observe many cellular structures. ने बहुत सारे cellular structures को observe किया है, including the nucleus and chloroplast. But unfortunately, he is not credited with their discovery. अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना. थैंक यू.